Good morning, students. Welcome to e-learning. Today, in our chapter 5, cost of production and concept of revenue, we are continuing with the concept of revenue topic, and we already started that. And that we have completed our total revenue topic. Now, today we are going to start with average revenue and marginal revenue. Now, before that, I want to tell you that we have all the 5 chapters. Okay, in examination, so kindly prepare all the chapters. This chapter also will get over with the 3 lectures remaining, like today 1 lecture and after that 2 more lectures will be there. So try to complete as soon as possible. If you find any doubt regarding any other previous chapters or previous lectures, you can just call or message me. Now let's start today lecture with average revenue and marginal revenue. Now before that, we know that what is total revenue. Total revenue means we find that here nothing but it is all about the total amount, that is price per unit into number of units sold. It is becomes the total unit, or we can say total revenue, the income earned by the person by selling the units with its price. Okay, not the cost of production. Now coming to the average revenue, so whenever the word average comes, we know it is a per price sale. So here income earned, or we can say income from per unit of sale, is the average revenue. Average revenue can be determined by dividing the total revenue to the we can say sales unit. So here we can say average revenue equals to total revenue divided by total sales. So this is the, we can say, formula which we need to remember, so that we can easily write the meaning also, and we can know that it is a price, or you can say it is an income per unit of sale, that is the average revenue. So whenever revenue comes, you have to word use income. So whenever the cost comes, you have to go with cost. Whenever the revenue comes, you have to go with income word. Now again, in small mathematical formula, AR equals to TR upon Q, where AR equals to average revenue, TR equals to total revenue, and Q equals to quantity sold. So this is our formula, and this is the meaning of average revenue, that is income per unit which we get. So to understand more clearly, we have taken an example here. So let us understand with the help of example. One firm has 1000 units of pen. So we are taking 1000 units. Okay, 1000 units of पेन आर देयर, वेयर द टोटल रेवेन्यू इज 50,000. सो ये पूरा 1000 पेन कितने में सोल्ड हुआ? इट इज बिन सोल्ड फॉर रुपीज 50,000. नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, वी हैव टू यूज व्हाट? टोटल रेवेन्यू, दैट इज 50,000, and total sale, that is 1000 units. So 50,000 divided by 1000, you get 50 rupees, which is your average revenue. I hope you have been clear. So it is a very simple concept. हमको पूरा total number of revenue दिया होगा, we are given total number of units sold, and then after we have to just divide the total revenue which is in rupees divided by total units sold which is in units. उसको divide करेंगे and we will get per price in, income per sale. सो हमको एक पेन कितने में इनकम मिल रही है, कितना टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एक पेन से, वो पूरा मिल जाएगा, उसको बोलेंगे एवरेज रेवेन्यू. नाउ लेट्स गो विथ फर्दर टॉपिक, दैट इज हियर. So you find that normally all the sale units of the commodity are same at the price, and the average revenue is equal to the price. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है इज द एवरेज प्राइस. मतलब जितने भी यूनिट सोल्ड हो रहे, कौन से प्राइस पे सोल्ड हो? 50 रुपीज़ पे. तो 50 रुपीज़ इज आवर एवरेज रेवेन्यू, एंड वही मार्केट का प्राइस है. सी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. सो प्राइस स्टैंड्स फॉर व्हाट? द अमाउंट विच द प्रोडक्ट इज बीन सोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइस. जो मार्केट में सोल्ड होता है, जैसे आपने वी कैन से 8th-9th स्टैंडर्ड में मार्केट प्राइस और लिस्टेड प्राइस ये सब सुना होगा. वी फाइंड दैट ऑल द पैकेट्स विच वी परचेज, दे हैव द MRP, दैट इज यू फाइंड दैट मार्केट रिटेल प्राइस. सो यू फाइंड दैट इज द प्राइस विच इज बिन देयर. और हमारा एवरेज रेवेन्यू किस पे कैलकुलेट है? सेम प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है. सो नॉर्मली हम ये थिंक कर सकते हैं कि दोनों का प्राइस सेम है और दोनों इक्वल है. क्लियर? सो द फर्म सेल्स, तो फर्म भी वही सेलिंग प्राइस पे, कोई भी कॉस्ट प्राइस पे तो सेल नहीं करेगा, सेलिंग प्राइस पे सेल करेगा, तो वो उसका रेवेन्यू उसके हिसाब से जनरेट होता है. नाउ इफ प्राइस एंड एवरेज रेवेन्यू आर इक्वल, then for the producer it is demand curve and its average revenue curve are from them. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि उसका जो डिमांड कर्व बनेगा, when he prepares the demand curve, there it's the same which is look like his average revenue. यहाँ पे उसका डिमांड कर्व एंड एवरेज कर्व दोनों सेम दिखेगा. क्यों? क्योंकि दोनों का प्राइस क्या है? सिमिलर है. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज. डिमांड पे हम क्या करते हैं?
डिफरेंट प्राइसेस पे उसकी डिमांड चेक करते हैं और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वी ट्राई टू फिक्स द पर्टिकुलर प्राइस डिटर्मिनेशन याद करो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। उतना डीप में नहीं जाना, हमको यही समझना है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी डिमांड है वो समझ आता है। तो यहाँ पे अगर प्राइस सेम है, एवरेज रेवेन्यू सेम है, तो उसका डिमांड कर्व भी सेम होगा, एवरेज रेवेन्यू भी सेम होगा। Now, demand curve shows that different price on different price how many commodities consumer is ready to purchase. So here we can say that there are certain consumers which are willing to purchase that particular product with a higher price and purchase the particular product with a lower price also. So that time we find that here demand curve shows all the different combinations of price and the demand which has been there. But as we have fixed or as we have known कि एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलता है और हमने एवरेज करके निकाल दिया और वो डिमांड के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे जैसे ऊपर बोला इट इज़ इक्वल टू द प्राइस एंड डिमांड को जस्ट शोज, जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे ये लाइन समझाने के लिए बोला वही लाइन नीचे लिखा है। ऑन द अदर हैंड एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर विथ द सेल ऑफ द कमोडिटी। मतलब एवरेज रेवेन्यू का जो ग्राफ रहेगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर लिखा क्या होगा, डिमांड का की जगह पे लिखा होगा एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट सोल्ड होगे वैसे वैसे इनकम इंक्रीज होगा। वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे। क्लियर? सो इन शॉर्ट वी रिमेंबर दैट एवरेज रेवेन्यू बाय द एंगल ऑफ प्रोड्यूसर। अगर एवरेज रेवेन्यू हम देखें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज़ द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर एंगल। मतलब कंज्यूमर जो प्राइस सोच रहे इतने प्राइस पे ये कमोडिटी ले सकते हैं, वही प्राइस पे हमारा जो प्रोड्यूसर है वही सोचता है। सो प्रोड्यूसर थिंक्स एज पर द कंज्यूमर एंड हिज एंगल इज अ थिंकिंग ऑफ द कंज्यूमर एंगल, एंड इसकी वजह से ही ट्राई टू गो विथ कीपिंग द प्राइस एज पर द एवरेज। क्लियर? आई होप यू आर बीइंग क्लियर कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द डिमांड और वी कैन से प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। क्लियर? उसके ऊपर एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ बिन रिटर्न इनकम जनरेटेड एवरेज में। क्लियर? कॉस्ट नहीं लिखा है, मतलब उसके अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होके इनकम आ जाता है और वी कैन से टोटल सेल यूनिट विल कम एंड देन आफ्टर प्रॉफिट इज बिन अर्न। सो दैट इज वाई इट इज रिटर्न टोटल इनकम विच इज बिन अर्न। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू. Marginal revenue is a revenue from the sale of one additional. Whenever the word marginal comes, you have to remember कि हम एक्स्ट्रा सेल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक यूनिट प्रोड्यूस करके उसको सेल कर रहे हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा एक यूनिट सोल्ड कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा हमारा मार्जिनल। तो वो एक्स्ट्रा सेल करने का जो प्राइस आएगा वो उसको बोलेंगे हम मार्जिनल रेवेन्यू. सो हियर द मार्जिनल रेवेन्यू इज अ चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी. मतलब वी हैव सोल्ड सपोज 100 यूनिट्स, 100 यूनिट से एक और एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड किया, तो वो एक और एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड करने का जो प्राइस आएगा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट वी कैन से दैट इज अ मार्जिनल रेवेन्यू. So when I am talking about price, it is coming towards the revenue. Okay. For example, here a firm receives income of 50,000 by selling 1,000 units of pen. मतलब 1,000 पेन बेची और उसके अंदर से उसका इनकम कितना हुआ, टोटल 50,000 इज द इनकम विच इज बिन देयर. नाउ व्हाट्स हैपनिंग अगेन, नाउ द फर्म सेल्स 1,001 units of pen. Previously it was 1,000 for 50,000 rupees. Now it is 1,001 units of pen which are been sold with the price of 50,045 rupees. So now we find that there is an increase, that is 50,000 से वो increase होकर 50,045 rupees हो गया. So ultimately we know the marginal rate, हमको difference लेना है. Yes, so here this means there is an increase of 45 rupees, that is the marginal revenue. मतलब यहाँ पे 45 rupees का increase हुआ, वो हमारा क्या है, marginal revenue. So clear cut we can see that is यहाँ पे 1,000 का 50,000 है, ये 1,001 का 50,045 है, तो दोनों का डिफरेंस ले लो तो 1 यूनिट इक्वल्स टू 45 रुपीज़ विच विल कम. सो एडिशनल 1 यूनिट विच इज बीन सोल्ड इट इज़ अ प्राइस ऑफ 45 रुपीज़. सो दिस इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल अबाउट. अगर उसको क्लियर कट फॉर्मूला में लिखना है विच वी हैव टू नो हियर, MR इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, N equals to number of units sold, revenue R equals to revenue generation from sale of N number of units. Okay, here remember N कि भाई टोटल N कितना हुआ है, R N minus 1, सॉरी यहाँ पे R N minus 1 आएगा, इक्वल्स टू N minus 1 रेवेन्यू फ्रॉम द यूनिट्स. यहाँ पे लिखना R N minus 1 ब्रैकेट में. क्लियर? नाउ सो वी फाइंड दैट जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, इन द अर्लियर एग्जाम्पल वी हैव सीन 1,000 पेन्स वर सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 50 and the total revenue is 50,000, and we have seen that if 1,001 unit was been sold
then the total revenue which is generated, that is 50,045 rupees. Now putting the formula n equals to 101, because that is a big number. Then after, therefore n 1 equals to 1000, मतलब 101 में से 1 गया तो 1000. Now marginal revenue of n number of units, so Rn minus R bracket n minus 1. So हमारा Rn क्या है, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ पहले वाले में, दैट इज हियर n इक्वल्स टू 1001. सो 1001 पे रेवेन्यू जनरेट हुआ 50,045 रुपीज़. सो 50,045 रुपीज़ माइनस Rn माइनस 1. सो Rn माइनस 1 इज हियर 1000 यूनिट. 1000 यूनिट का प्राइस कितना है, टोटल रेवेन्यू इज 50,000. सो 50,045 माइनस 50,000, यू गेट द डिफरेंस, दैट इज 45. अगर उसको और सिंपल वे में और अच्छे से लिखना है तो यहाँ पे एम आर इक्वल्स टू, देयर इज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू, दिस इज अगेन अ न्यू फॉर्मूला विच इज नॉट देयर इन योर टेक्स्ट बुक, चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. सो चेंज इन टोटल रेवेन्यू कैसे फाइंड करेंगे, बड़े नंबर से छोटे नंबर माइनस करेंगे. सो इट इज 50,045 माइनस 50,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज 1001 माइनस 1000. So ultimately it will become how much, 45 upon 1. 45 upon 1 is nothing but we can say 45 rupees. So here this completes your concept of marginal revenue. I hope you have been understood. थोड़ा बहुत मैं फास्ट गया होगा तो थोड़ा you try to go with slow. Simply it is just average. जैसे हमने average cost and marginal cost लर्न किया है वैसे ही रेवेन्यू है. रेवेन्यू में सेल्स यूनिट आते हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन यूनिट, उतना ही क्लियर कट समझो तो आपको फॉर्मूला वाइज सब कुछ सेम दिखेगा. क्लियर. तो एग्जाम्पल्स आर सेम ऑफ पेन ओनली, जो आपको कन्फ्यूजन नहीं करेंगे. क्लियर. एंड हियर आई हैव एडेड वन एक्स्ट्रा, वी कैन से फॉर्मूला विच यू वांट टू रिमेंबर. सो दिस इज अ टेक्स्ट बुक फॉर्मूला विच इज बिन देयर, एंड हियर यू फाइंड दैट दिस इज अगेन अ न्यू फॉर्मूला or a little bit change formula which gives the same exact answer which you can also write. So I hope you have been clear for this particular thing. If you find any doubt, you can just call or message me regarding this topic. And in your examination, 5 chapters are there, remember, and complete your notes as soon as possible so that you can revise yourself. I will be sending again 2 more lectures for this particular topic, and then after we'll go with the overview of the different chapters. Thank you.